Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 24 December 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about India becoming the largest populated country in the world. तो एज यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सेंसस ऑफ 2011 जो कि लास्ट सेंसस हुआ था, तो उसमें इंडिया का जो पॉपुलेशन था इट वाज 1.3 बिलियन, बट करेंटली इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय द नेक्स्ट ईयर इंडिया का जो पॉपुलेशन है इट विल बी 1.43 बिलियन, विच बेसिकली विल बी द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय सरपासिंग द पॉपुलेशन ऑफ चाइना. So this can be important for our prelims, and we'll look at some facts about the population of India, how it can be a challenge as well as how it can be an opportunity for us as well. So it can be important from GS paper on Indian society population and its issues point of view, and has been taken from the Indian Express. Now, if you look at the current context, then it is estimated that by the next year only, by the April of 2023, the population of India will be 1.43 billion, which will be more than the population of China. Okay, so in 2022, China will for the first time registered an absolute decline in its population. Okay, यहाँ पे जो population growth है, so China, because it is witnessing a negative growth, so this is the reason why India will be able to surpass the population of China in the next year. So there are certain factors, so there are certain drivers of India becoming the highest population. तो पहले यहाँ पे कहा गया about the mortality and fertility के बारे में. तो अगर हम बात करेंगे mortality and fertility के बारे में, the first thing that we should know is that is responsible for the high population of India is the crude death rate. ठीक है, अब जो ये crude death rate है, the number of person dying per year per 1000 population को कहा जाता है crude death rate. So initially ये कैसा था in 1950 के टाइम में, इंडिया के केस में it was 22.2. ठीक है, एंड चाइना के केस में रोज 23.2. लेकिन अभी अगर आप देखोगे बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस दैट पीपल हैज रिगार्डिंग और विद रेस्पेक्ट टू द हेल्थ सेक्टर, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिजिट्स है नाउ इट इज फेल डाउन रैपिडली. ठीक है, तो करेंटली यहाँ पे जो क्रूड डेथ रेट है इट फेल टू सिंगल डिजिट फॉर चाइना फर्स्ट इन 1974 to 9.5 एंड फॉर इंडिया इन 1994. तो 1994 के टाइम में चाइना का डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू लुक एट द डेटा ऑफ इंडिया यू विल कम टू नो दैट बाय द ईयर 1994, the crude death rate, that is the number of persons dying per year per 1000 population, so it became 9.8. और 2000 के टाइम में you'll find that India और चाइना का लगभग सेम ही हो गया था, it was 7.3 to 7.4. ठीक है, so इसीलिए we can say the population is actually growing. Then if we talk about the life expectancy at birth, तो ये जो expectancy है, there is life expectancy at birth is defined as how long on an average a newborn can expect to live if current death rates do not change basically. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये life expectancy है, so another mortality indicator is life expectancy at birth. So between 1950 से 2020 का हम बात करेंगे, it went up to 43.7 to 78.1 years for China. ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे initially जो if we look at the data of India, तो इंडिया में देखिए 1950 के टाइम में इट वाज ओनली 41.7. दैट इज अगर मान लीजिए कि एक न्यू बॉर्न है, इट वाज एक्सपेक्टेड टू लिव फॉर ओनली 41.7 years, बट करेंटली बिकॉज ऑफ द, एज आई टोल्ड, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एक्सेस टू द न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑफ द पीपल नाउ इट हैज इंक्रीज. इंडिया के केस में इट इज 70.1 इन द ईयर 2020. तो इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. एंड ऑल्सो अबाउट द टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में, तो अब ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, सो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ बेबीज एंड एवरेज वुमेन बियर्स ओवर अ लाइफ टाइम. तो एक लाइफ टाइम में एक वुमेन कितना यहाँ पे बेबीज पैदा करती है, उसी को कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट. तो ये जो रेट है, तो इट वाज एक्चुअली वेरी हाई फॉर चाइना एंड इंडिया एज वेल इन 1950. तो इट वाज समवेयर अराउंड 5.8 फॉर चाइना एंड 5.7 इन इंडिया के केस में. बट करेंटली अगर आप देखोगे इन 2021 या 19 के टाइम में इट इज बेसिकली फेल डाउन टू 2. ठीक है, यहाँ पे इट इज फेल डाउन टू 2. So इंडिया का जो TFR है, it has fell to 2 in 1919 to 2021 from 3.4 था 1990 के टाइम में, it was 3.4. So these are certain data that you can remember, that you can note down in order to write an answer regarding the population increase of the population of India. But then again, यहाँ पे जो population that has been estimated 1.43 billion population, तो as you must be knowing कि 130 crore और 1.3 population में ही, यहाँ पे 1.3 billion population में ही इंडिया में इतना सारा issues यहाँ पे face हो रहे थे. ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए lack of employment हम कह सकते हैं, lack of proper healthcare facilities, or you can say the increasing rate of
क्राइम, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारा आप देखोगे देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. तो यहाँ पे इफ मान लीजिए कि अगर इंडिया का जो पॉपुलेशन है इफ इट इज एट 1.43 बिलियन बाय द नेक्स्ट ईयर, तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एंड आल्सो देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज दैट इंडिया हैज टू फेस. तो यहाँ पे अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, सो हैविंग द मोस्ट people on the planet could prove to be a big negative for India unless it can provide food, education, housing, healthcare facilities. तो देखिए बेसिकली कहा गया है कि इंडिया के ऊपर जो भी बर्डन है, द बर्डन इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, जो फूड के ऊपर बर्डन है या एजुकेशन के ऊपर बर्डन जो है, हाउसिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, नाउ दिस बर्डन इज गोइंग टू इंक्रीज विद द पॉपुलेशन बिकमिंग हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब ये जो स्केल ऑफ दिस चैलेंज इज क्वाइट जायजेंटिक बिकॉज इंडिया हैज टू कम अप विद सम बेटर पॉलिसीज इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग food हो गया, education हो गया. And also across India, water scarcity is a chronic issue. If you look at the towns, if you look at the metros of India, then यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, it is water का issue. ठीक है, because you will find in most of the places there is a lack of running water. ठीक है, and you will find जो यहाँ पे लोग होते हैं, जो यहाँ पे people रहते हैं, citizens रहते हैं, तो they mostly have to depend upon the water supply. ठीक है, जो सप्लाई का पानी होता है उसके ऊपर यहाँ पे पानी को खरीदना पड़ता है. ठीक है, तो this is the reason why आप देखो कि यहाँ पे माना जाता है कि one of the most important factors or causes which is related to the water यहाँ पे कहा जाता है because of the higher population only. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यहाँ पे already you know that population has been responsible for the water scarcity. तो आगे जाके this can become more crucial in nature. All these needs are crucial, but by far the single most important thing for India is to generate jobs. ठीक है, because you know the India has always been facing a menace of unemployment. बहुत सारे reasons है इसकी वजह यहाँ पे इसके पीछे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, बिकॉज जॉब्स लिमिटेड है और पॉपुलेशन यहाँ पे अनलिमिटेड है. गेटिंग माय पॉइंट. दिस इज द रीजन व्हाई सच हाई पॉपुलेशन जो है, इट कैन आल्सो लीड टू द नेगेटिविटी और यू कैन आल्सो फाइंड दिस कैन लीड टू अ नेगेटिव इंपैक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज यहाँ पे जॉब्स जो है देयर कैन बी अ स्कैर्सिटी ऑफ जॉब्स एज वेल. द स्केल ऑफ द पर्टिकुलर चैलेंज इज ट्रूली डॉन्टिंग. इन 2020 का हम बात करेंगे, इंडिया हैज 900 मिलियन पीपल इन द वर्किंग एज ऑफ 15 to 64. ये 2020 का ही डेटा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 30 का अगर हम डेटा यहाँ पे अगर हम एस्टिमेट करते हैं, देन इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड बाय अनदर 100 मिलियन. ठीक है, सो विच इज अभी 2020 के टाइम में इट इज 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वो इज बेसिकली द वर्किंग एज ग्रुप. तो इस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना, इस पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करना विल बी अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया इन द अपकमिंग टाइम्स. But regardless of all the challenges that India has to face, definitely there are certain opportunities also that India can reap from it. Okay? For example, India can continue its claim or India can strengthen its claim in becoming a permanent member of the UNSC. I've covered the number of topics that India has always aspired to become a permanent member of the UNSC. ठीक है, now अगर इंडिया का जो पॉपुलेशन है if it is highest in the world, then हो सकता है यहाँ पे at the permanent level पे यहाँ पे recognition जो है यहाँ पे जो claims है it can be strengthened by India. ठीक है, नाउ द जियोपॉलिटिकल रियलिटी हैज चेंज एंड न्यू पावर्स ऑफ इमर्ज. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो ये 5 पावर्स जो है, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस एंड यूएस, नाउ दिस यूज्ड टू बी द ग्रेट पावर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट करेंट टाइम पे अगर आप देखोगे, दे आर नॉट द ओनली पावर्स, दे आर नॉट ओनली द मेजर इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का अगर आप स्पेशली बात करेंगे तो यूके से अभी ऊपर इंडिया का इकोनॉमी है. ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी इज पावरफुल देन द इकोनॉमी ऑफ यूके. तो एज सच इंडिया का जो क्लेम है, नाउ इट इज सपोज टू बी स्ट्रेंथन इन द अपकमिंग times. And also rise in the workforce. ऑब्वियस सा बात है, जब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करेगा, जो यहाँ पे वर्कफोर्स, जो यहाँ पे वर्किंग एज का पॉपुलेशन है, वो भी साथ साथ ग्रो करेगा. तो हो सकता है यहाँ पे इंडिया कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ द और रिप द पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एज वेल. तो सप्लाइंग you will find with more than 65% of the working age population, that is यहाँ पे जो 18 से लेके 65 तक का जो population है, so India can rise as an economic superpower in the coming times, supplying more than half of Asia's potential workforce over the coming decades. So increase in the labor force enhances the productivity of the economy, obvious सा बात है, and rise in women's workforce. देखिए अब जब population grow करेगा, obvious सा बात है, not just the male population, the female population will also be increasing, because now that we speak about equality of women, now that we speak about equality of gender, तो इसमें डेफिनेटली यहाँ पर जो वुमेन का पॉपुलेशन है साथ साथ ये भी ग्रो करने वाला है. तो राइज इन वुमेन्स वर्कफोर्स नेचुरली अकम्पनीज अ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी. अब देखिए, मान लीजिए मोर एंड मोर वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द ऑफिसर्स, इन द वेरियस टास्क, दैट डेफिनेट यहाँ पे बात है कि दे विल फाइंड लेस टाइम टू रिप्रोड्यूस मोर. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फर्टिलिटी है, द फर्टिलिटी विल ऑल्सो बी कंट्रोल एंड हेंस विल बी एबल टू अचीव अ स्टेबल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो व्हाइल इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड?
इट इज बेसिकली आप कह सकते हो जो बोनस या जो प्रॉफिट हमें मिलने वाला है बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर शेयर ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन. तो यू विल फाइंड देखिए 65% जो है ना इंडिया में जो पॉपुलेशन है इट इज वर्किंग पॉपुलेशन ओनली. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रीप द बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो जो भी बेनिफिट मिलेगा इट इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है फ्रॉम दिस लार्ज वर्कफोर्स ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन. ठीक है, रीपिंग इट्स पोटेंशियल बेनिफिट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एज वेल एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर इंडिया इन द अपकमिंग टाइम वुड बी स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर पॉपुलेशन माना जाता है स्किल डेवलपमेंट. क्योंकि यहाँ पे जो आप मान लीजिए ये जो जॉब है, तो जॉब में जिस तरीके का स्किल चाहिए होता है तो ये यूथ के पास उतना स्किल होता है नहीं. तो स्किल डेवलपमेंट फॉर द यूथ इज गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर दैट इज गोइंग टू हेल्प in realizing the opportunities of the huge population of India. Now, इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the Dokra metal craft. So this can be important for our prelims because आपको पूछेगा कि ये कहाँ से belong करता है, and also from mains it can be important from GS paper 1 Indian art and culture point of view. It has been taken from the Hindu. तो ये जो डोकरा है ये बहुत सारा स्टेट में इसे प्रैक्टिस किया जाता है, बट मेजरली इफ यू फाइंड वेस्ट बंगाल लाल बाजार इज द हब. ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो लाल बाजार रीजन है, सो इट इज नॉट जस्ट एन आर्ट हब बट इट इज ऑल्सो बिकमिंग a center for Dokra, which is a popular metal craft. This place is important, West Bengal's Lal Bazaar area. So as I was saying about the current context, it basically belongs to the regions of West Bengal's Lal Bazaar. So it is not just an art hub, but it is also becoming a center for Dokra, a popular metal craft. So this you can see in the picture is of the Dokra metal craft. This is how it looks like. And this is basically dependent on the metal bronze. ठीक है, bronze से बनाया जाता है. In 2018 का अगर हम बात करेंगे, Dokra craft जो है from West Bengal, that is from the Lal Bazaar area, it was presented with the geographical indication tag as well, जिसे हम GI tag कहते हैं, right? तो GI tag is a sign used on products पे हम यूज करते हैं that have a specific geographical origin. ठीक है, तो माना जाता है कि it has origin in this region only and possesses qualities or a reputation that are due to that origin. ठीक है, तो this is the reason why GI tag are applied or are given to various products to maintain the uniqueness of the product. All right. तो about Dokra के अगर हम बारे में बात करेंगे तो it is a form of ancient bell metal craft. ठीक है, it is a form of ancient bell metal craft practiced by the Oja metalsmith living in the states like Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal and Telangana. लेकिन बाकी सारा रीजन में यहाँ पे GI tag नहीं है. If we talk about the Dokra metal craft, it has a GI tag in West Bengal. However, the style and also the workmanship of this artisan community varies in different states. क्या अब यहाँ पे माना जाता है कि झारखंड जो Dokra art होगा, it is not same as that of the West Bengal or Chhattisgarh. So it is basically geography के locations के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे डिफर होता है how it is going to look like. So Dokra or Dokra is also known as bell metal craft भी इसे कहा जाता है. अब ये जो नाम है it has come from the Dokra Damar tribe. ठीक है, so this is the main tribe which practices this particular ये जो metal craft है. So who was a traditional metal smith of West Bengal. ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे दिया गया है Dokra metal craft. ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा Dokra Damar tribe. और ये जो tribe है, the tribe extends from झारखंड से लेके पाया जाता है उड़ीसा तक पाया जाता है as far ahead to छत्तीसगढ़, राजस्थान and even Kerala. ठीक है, so they are found in number of region, but mostly if you see they are a major tribe of West Bengal. The technique of lost wax यहाँ पे casting यूज करते हैं. यहाँ पे जो technique है it is known as lost wax casting is named after their tribe, hence it is known as Dokra metal casting. So it is basically named after their tribe, that is Dokra Damar tribe. The Dokra artifacts are made in the brass में बनाया जाता है. I'm sorry, I told you, I think I told about the bronze. ये bronze में नहीं, सब brass में बनाया जाता है and are unique in that the pieces do not have any joints. ठीक है, यहाँ पे कोई joints नहीं रहता है. If you have noticed in the picture, there are no joints. इस figurine जो है it takes about a month to make. The dancing girl of Mohenjo-daro जो है from the Harappan civilization, it is one of the earliest Dokra artifact. So if you have read about the Indus Valley civilization, definitely you have learned about the findings of Mohenjo-daro. So dancing girl जो discover हुआ था Mohenjo-daro में, it is known as the earliest Dokra artifact that is now known. So Dokra art is still used to craft artifact, accessories, utensils and jewelry as well. इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
The next article is about the pride of Arunachal Pradesh, that is Geto Sora, who has recently won the Junior International Badminton Championship title. It can be important for our prelims. Mains के लिए इतना important नहीं है, but definitely you should know about this kid. So it has been taken from the Arunachal Times. So budding badminton sensation, that is Geto Sora, as you can see in the picture. Now he has once again made Arunachal proud by winning the top arena Junior International Badminton Championship title. ठीक है, तो as you can see in the picture, it is tops arena International Junior Badminton Championship, which was taking place in Malaysia on Friday. He won the championship title after beating Malaysia's second seed Jari Tay को उन्होंने हराया है in straight 21-5, 21-16 sets में. This is Sona's second international badminton title in 2 months में. तो if you remember in November के time में the 7-year-old Sora जो है, now he had won the multinational BTY Yonex Singha championship, which was held at the badminton school in Bangkok में ही held हुआ था in Thailand में. ठीक है, so बहुत कम टाइम में ही he has achieved the number of achievement. ठीक है, the name is very important. So इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the National Farmers Day. So the National Farmers Day has been observed, celebrated by the Longding KVK with the farmers of Mopakhat in Longding district on Friday. It can be important for our prelims. The date is very important, that is December 23rd, and also you should have knowledge about the importance of this particular day, why it is celebrated from the Chase paper agriculture point of view. It has been taken from the Arunachal Times. तो if you look at this particular day, so किसान दिवस के बारे में, इसे फार्मर्स डे या इसे किसान दिवस भी कहा जाता है, which is celebrated on December 23rd every year. It is also an opportunity to raise awareness. अब देखिए मेन जो मुद्दा है यहाँ पे ये फार्मर डे के ऊपर में, you should know the main motive is to set awareness or is to create awareness among the people to help them know about the significance of the farmers. ठीक है, तो farmers एक society के लिए कितना important है, तो ये सारा चीज यहाँ पे you can say जो अवेयरनेस है इसी को स्प्रेड करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है. सो इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस एंड द इश्यूज द फार्मर्स फेस इन इंडिया, इंक्लूडिंग द इश्यूज रिलेटेड टू लैंड राइट, एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर. तो देखिए आपने शायद सुना होगा अबाउट द लो इनकम ऑफ फार्मर, अबाउट द फार्मर सुसाइड के बारे में. तो इंडिया में काफी यहाँ पे प्रेवलेंट है फार्मर सुसाइड, तो इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि इंडिया में जो फार्मर सुसाइड होता है ना, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द लो इनकम ऑफ फार्मर. तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल डबलिंग फार्मर्स इनकम. ठीक है, so you'll find a number of schemes are there to support the farmers of India. For example, we can talk about the PM Kisan scheme के बारे में, जहाँ पे incentive, जहाँ पे DBT या पे you can say direct benefit transfer किया जाता है to help the farmers. ठीक है, तो farmers are so important, तो it is not possible to neglect them at any cost, है कि नहीं. तो इसीलिए तो उनका जो भी issues है, so those issues are not just of the farmers, those issues are actually national issues है. ठीक है, for example अगर मान लीजिए कि farmers are not getting their क्रेडिट, इफ दे आर नॉट गेटिंग देयर लोन, तो उनको डिपेंड करना पड़ता है मनी लेंडर के ऊपर. तो मनी लेंडर कभी कभी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा लेता है, जो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे इंटरेस्ट अप्लाई करता है. तो इसीलिए वी शुड नो दैट द फार्मर्स शुड एक्चुअली लर्न अबाउट एवरी scheme about the government, and also the people should be made aware of the challenges that the farmers are facing in India. It is a day observed in India to honor and pay tribute to the farmers and the important role they play in the country's economy and society. You should know ये जो agriculture है, even though it is not the highest contributor of the Indian GDP, but it is the mainstay of the Indian economy. सबसे important आप देखोगे agriculture ही है, because देखिए 60-70% of the population of India is engaged directly or indirectly in agriculture only. ठीक है, the day is celebrated on December 23rd में से क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? Because it is the birth anniversary of Chaudhary Charan Singh. Now he is the 5th Prime Minister of India, but you should know he was the champion of the farmers. He used to have a voice. He used to raise the voice for the farmers on behalf of the farmers. Who was the 5th Prime Minister of India and a strong advocate and a proponent for the rights of farmers as well. Okay, so farmers, you already know that the backbone of our economy, and to honor their hardship, ये जो day है इसे सेलिब्रेट किया गया है since 2001 से. ठीक है, now this day also marks the birth anniversary of the champion of the Indian peasants or the farmers, and he is the 5th Prime Minister of India, that is Chaudhary Charan Singh. इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, and this you can see is the date, that is 23rd December. About
चरण सिंह के बारे में अगर हम बात करेंगे, चौधरी चरण सिंह के बारे में, so this you can say the picture of Chaudhary Charan Singh, who was born in 1902 at Noorpur in Meerut district of UP, and was the Prime Minister of India he was the 5th Prime Minister of India from 1979 से लेकर 1980 तक. Being a proponent of rural and agricultural development, he made continuous effort for keeping agriculture at the center of planning for India. ठीक है, तो एज अ प्राइम मिनिस्टर ही यूज्ड टू ऑलवेज स्ट्रेस एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. ही टुक अ लीडिंग पार्ट इन फॉर्मुलेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द डेट रिडम्पशन बिल 1939. अब ये जो बिल है, इट वाज इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू द पीजेंट्री फ्रॉम मनी लैंडर्स. एज आई टोल्ड यू, मनी लैंडर्स आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट द फार्मर्स फेस बिकॉज दे टेक द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स, बट देन अगेन दे हैव टू गो थ्रू द हार्डशिप. और मनी लैंडर्स क्या करता है, दे यूज यूजरियस मेथड, दे यूज वायलेंट मेथड टू एक्सैक्ट देयर मनी बैक. So he was instrumental in bringing about the Land Holding Act of 1960 as well, which was aimed at lowering the ceiling of land holding. देखिए यहाँ पे जो लैंड, एक फार्मर यहाँ पे कितना लैंड होल्ड कर सकता है, तो उसमें जो सीलिंग था उसे लोअर करने में उन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू मेक इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्टेट. ही वॉज द ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स, उन्होंने यहाँ पे कंपोज किया है. फॉर एग्जाम्पल बुक्स हो गया, पैम्फलेट्स हो गया. फॉर एग्जाम्पल एबॉलिशन ऑफ जमींदारी जो कि सिस्टम विच इज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मुगल्स, ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स एज वेल. देन कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक्सरेड, India's poverty and its solution, peasant proprietorship or land to the workers, and prevention of division of holdings below a certain minimum. These books are very important. These books आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन कम से कम you should remember the names of the book which was written by Chaudhary Charan Singh. ठीक है, but please do not confuse, even though he was the champion of the Kisan, the farmers in India, but please do not confuse him with the slogan Jai Jawan Jai Kisan. तो ये जो slogan है उन्होंने नहीं दिया था. The slogan that is Jai Jawan Jai Kisan, जो is a well-known slogan which was given by the second Prime Minister of India, that is Lal Bahadur Shastri. Now, ये सारा क्वेश्चन देखा था in the last video. Let's look at the answers. So the answers for the question are, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था अबाउट द समुद्रयान मिशन के बारे में. ऑल द स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर करेक्ट. समर्थ जो है, इट इज स्किल डेवलपमेंट मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. देयर आर सम मोर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड टू द प्रीवियस वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स आर, तो ये जो सेंट्रल जेल टर्न करेक्शनल सेंटर, इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द CM Pema Khandu in Papumpara district. A movie titled The Man Who Knew Infinity is based on the biography of S. Ramanujan. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.